नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कपूर आपका सीजन 2 के एपिसोड 2 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। टेक टॉक्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करते हैं। वर्ल्ड ओवर से डिफरेंट लोगों को हम लोग यहाँ इनवाइट करते हैं जो अपने फील्ड के महारथी होते हैं। वो हमारे साथ एज एन एक्सपर्ट जुड़ते हैं और उनके साथ हम उनके टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशंस करते हैं। दोस्तों, इस पूरी सीरीज को बनाते समय मैंने ये रियलाइज किया कि आईटी तो अपने आप में एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ही, लेकिन साथ ही में आईटी के अंदर जो स्पेशलाइजेशंस हैं वो भी बहुत वास्ट होती जा रही हैं। हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आईटी के अंदर कितनी सारी ऐसी स्ट्रीम्स निकल चुकी हैं जिसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड व्यू पॉइंट अगर ना हो तो शायद हम लोग कहीं ना कहीं गलती कर बैठे। इसी सिलसिले को आज हम आगे बढ़ाते हुए डिस्कशन करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसको हम लोगों ने बहुत कम चर्चा में देखा है। जी हाँ, वेंडर रिस्क मैनेजमेंट। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जिसको ज्यादातर सीईओ लेवल के ऊपर ही टैकल होते हुए हमने आज तक देखा था। हमने नहीं सुना था कि आईटी के अंदर भी ऐसी फील्ड्स हैं जो वेंडर रिस्क मैनेजमेंट करके आपको बताती हैं कौन सा वेंडर आपकी कंपनी के लिए ठीक है, सेफ है और वो एक बिजनेस करने लायक है। इसी टॉपिक को हम आज डिस्कशन में डालने वाले हैं। मेरे साथ मौजूद रहेंगे जीआईएसपीएल के फाउंडर और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर नवीन धाम। आइए स्वागत कर लें उनका। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है डॉक्टर साहब, और आपका शुक्रिया कि हर बार हर एपिसोड के अंदर आप एक नायाब से टॉपिक लेके आते हैं और दुनिया के किस कोने में उसका एक्सपर्ट बैठा है ये जानकारी भी आप हमारे को देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दुनिया भर से जब एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम उनका इंट्रोडक्शन आपके साथ ऐसा रखें कि वो आपके साथ उतना ही जुड़ाव महसूस करे जितना कि हम लोग आपके साथ करने लग पड़े हैं, आपकी मेल्स के द्वारा, आपके क्वेश्चंस के द्वारा और आपके ढेर सारे प्यार के द्वारा। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर विनोद वर्मा वेगेसाना का, जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं टेम्पा फ्लोरिडा यूएस से। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो के अंदर। नमस्ते। सो हैव यू हर्ड अबाउट टेक टॉक सर देयर इन यूएस? यस आई डिड। मैंने सुना और देखा भी। सो दैट्स सो नाइस। So we would like to begin with you telling us something more about this vendor risk management thing. Yeah, so like IT vendor risk management is a discipline of addressing the residual risk that businesses and government face, while working with different service providers, because we have a lot of service providers, IT vendors and related third parties. So the scope of IT risk management is basically to address the risk of data protection, business continuity, security, and risk domains as relevant to laws, regulations, and industry best practices. दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वेंडर रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि डेटा क्या बोलता है वेंडर के बारे में। क्या ऐसी इंफॉर्मेशन कोई साइबर के ऊपर या आईटी के ऊपर अवेलेबल है जिसको हम लोग सर्च करें और वेंडर की और डिटेल्स निकल सकें, ताकि हम ये जान सकें कि वो बिजनेस के लिए सेफ है कि नहीं। सो कुछ इसी तरह की चीजें वेंडर रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो डॉक्टर विनोद, जब हम लोग ये बात करते हैं वेंडर रिस्क मैनेजमेंट की, तो क्या आईटी ही अकेला इसके लिए एक सब्जेक्ट जानना जरूरी है कि आईटी के अंदर भी कुछ स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है? Yeah, so the vendor risk management is like IT is part of the vendor risk management. So we have other functions too. We do vendor risk management from finance standpoint, from legal standpoint, from compliance standpoint. But IT is a crucial factor. The reason is like whenever we share data with the suppliers, so we need to ensure that that particular data is being appropriately protected, at a vendor side or a supplier side. So what we do in vendor risk management is like, we do a lot of, we conduct an assessment, to the suppliers. So we see like how mature the suppliers are in managing their risk, and also we assess their cybersecurity posture. So based on that, we get an idea
how strong the supplier is from the cyber risk management standpoint and from information security standpoint. So we do assess their risks. We do look into if there are any data breaches. From the supplier standpoint, we look at different sources to look for any of the data breaches. We do an in-depth, detailed forensic study on the supplier to get all the key points, from a cyber security posture standpoint. So, डॉक्टर नवीन, जब हम फोरेंसिक्स की बात करते हैं इसके अंदर कि फोरेंसिक स्टडी करके एक क्लाइंट को हम लोगों ने पूरा स्क्रूटनाइज कर लिया, तो इससे क्या मतलब रहता है? इसका मतलब ये हुआ कि आप जब वेंडर को आप ऑनबोर्ड कर रहे हो तो उससे पहले उसकी एक फोरेंसिक स्टडी होती है कि उसने पास्ट में कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ तो नहीं की। Okay. तो वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो हम जानेंगे तो हमें पता लगेगा कि उस वेंडर का पास्ट कैसा रहा और आपके यहाँ वो कैसा परफॉर्म करेगा। हो सकता है कि वो सेम क्राइम आपके यहाँ भी कर दे, है ना। तो कोई ऐसी क्रिमिनल केसेस या कुछ ऐसा उन्होंने पास्ट में कुछ किया हो जो कि अगेंस्ट द लॉ हो। और आपका एज अ सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल यहाँ कैसे काम करता है? एज ए साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल अगर आप जितने भी स्टैंडर्ड्स देखोगे जो कि साइबर सिक्योरिटी पे आधारित है, जैसे ISO 27001, PCI-DSS, SOC 1, SOC 2, ये सारे जो है वेंडर रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, क्योंकि इसमें एक अलग से क्लॉज है जो कि थर्ड पार्टी रिस्क असेसमेंट के लिए बोलता है। Okay. तो उसे हमें करना ज़रूरी है। जैसे कि इसका अगर मैं एग्जांपल लूँ तो जैसे IT सर्विसेज आपने किसी वेंडर को दे दी, अब वो आपके कंप्यूटर्स भी मेंटेन कर रहा है, आपके सर्वर्स भी मेंटेन कर रहा है, आपका पूरा नेटवर्क मेंटेन कर रहा है। वो ही इज़ अ किंग ऑफ योर नेटवर्क, योर एंटायर IT इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसके पास सब कुछ है इस वक्त, सारे पासवर्ड्स हैं, उसके बाद एडमिन पासवर्ड्स हैं, एडमिन राइट्स हैं, सारी प्रिविलेजेस हैं। वो चाहे तो कुछ भी आपका डेटा भी निकाल सकता है या आपका सर्वर और आपका पूरा नेटवर्क भी डाउन कर सकता है अगर उसके वो चाहे तो, राइट। तो इसके लिए हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि हम उनका बैकग्राउंड चेक करें, उनका रेफ चेक हो, पूरा क्रिमिनल चेक हो। तो और ये सारे चेक करने के बाद हम जो है उसको ऑनबोर्ड करते हैं। एक ISO 27001 के अंदर वेंडर पॉलिसी, वेंडर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए भी बोला गया कि वेंडर की सिक्योरिटी पॉलिसी भी हमें बनानी चाहिए कि वो अगर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रहा है तो वो कैसे कैसे परफॉर्म करेगा, उसको क्या क्या राइट्स दिए जाएंगे, उनको राइट्स देने का क्या तरीका होना चाहिए, उनसे लेने का क्या तरीका होना चाहिए, और एक लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर उनको काम किया जाता है, जो कि काम करने के लिए दिया जाता है, जो कि जीरो ट्रस्ट पॉलिसी के ऊपर आधारित होता है कि ट्रस्ट किसी पे ना करें। ओके, नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई। तो ये एक रूल होता है जीरो ट्रस्ट पॉलिसी का। वो हम हर एक पे नॉट ओनली वेंडर्स, दैट इज एप्लीकेबल ऑन इवन द एम्प्लॉइज एज वेल। जीरो ट्रस्ट सब पे होता है, एप्लीकेबल होता है। अगर वो एम्प्लॉय पे हो रहा है तो वेंडर पे भी होगा उतना ही। So, Dr. Vinod, I mean, how have you been tackling any person who is vying to be a vendor in an organization and his Google imprints or the imprints on the IT speaks otherwise, and they deter you from marking him as a good vendor? So, do they come across to you with their complaints? So, like when we conduct a vendor risk assessment, there are a lot of areas that we do, because nowadays it's most of the companies, they are outsourcing their IT, moving from on-prem to cloud. So the problem with cloud is like, because nothing is under our control, everything is under the supplier control. So our data is with them. They are managing the data. They are managing the infrastructure. They are managing their people. Who's going to work on the data. If it's like on-prem, we have a lot of control. So we can enforce the policies and procedures, that we have in our company. But when we outsource, so we need to be extremely cautious, because our data is going to be with the supplier, because they are going to play with the data. So we need to ensure that there are proper controls in place, that suppliers or vendors, they are appropriately protecting our data. Okay.
So we do a detailed forensic study, where we look at different risk vectors and see, whether there are any exploits in the past which are potentially exploited, from the supplier, or if there are any data breaches in the past. And when we do the forensic study, it will be very detailed. We go to a geographic location and do a study, because we scan their IPs, we scan their domains. So we know how strong, the supplier is from the cybersecurity standpoint. Can we categorize the vendor risks also? Okay. Yeah. Mm-hmm. So there are different risk categories. We have the legal risk, we have strategy risk, we have financial risk, we have compliance risk, where they need to follow different laws and regulations, because every country, every state, they have different laws and regulations. Based on the industry also, the regulations will vary. If you are in a finance industry, the regulations will vary. If you are in insurance industry, the regulations will vary. So you need to ensure that, they are in compliant, because our data also should be in compliance, because that's being now shared with the supplier. And then we have the geographic risk. Okay, so because if it's being shared with other locations, so it needs to meet the regulatory requirements of that particular country, and as well as our country. Okay, and we have the technical risk. So these are how their controls are affecting the security of our company. Okay, so then we have the subsequential risk. We have the resource risk, from the people standpoint. We have the replacement risk. What happens, if I need to replace that supplier? That will be considered as a replacement risk. Then we'll have the operational risk. Operational risk is from a day-to-day policy standpoint, procedure standpoint, how that's been impacted. And also we have the critical one, the most critical one is the reputational risk. Okay, what happens is the data, if our data has been breached at a supplier's side, because it's going to directly impact our company reputation. So these are different types of, risks that we evaluate, when we conduct, vendor risk assessment. डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या अगर किसी व्यक्ति ने अपने इम्प्रिंट्स को, अपने फुटप्रिंट्स को मॉडिफाई कर दिया हो, हिस्ट्री में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिलीट कर चुका हो, जो उसके बारे में नेगेटिव बोलती थी, तो क्या हमारे को उसकी नॉलेज मिल सकती है आपकी सर्विसेज को यूज़ करके? क्या इसमें हमारे को मदद मिल सकती है एक वेंडर को सही तरीके से एनालाइज करने में? अगर उसने अपने फुटप्रिंट्स डिलीट किए हैं तो हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं जो अलग अलग लेवल के होते हैं। अच्छा। जो कि ये पता कर सकते हैं कि उसने क्या छेड़खानी की है अपने फुटप्रिंट्स के साथ, तो वो पता किया जा सकता है। और वो डिपेंड करता है कि उसका केस समझने के बाद कि वो फुटप्रिंट्स डिटेक्टेबल हैं भी कि नहीं। तो अगर नहीं है तो फिर हमें और हायर जो है प्रोफाइल के लोगों को उसमें इन्वॉल्व करना पड़ता है, जिससे कि हम उनको देख सकें कि उसने क्या क्या छेड़खानियाँ की हैं अपने पास्ट में, और उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये वेंडर रिस्क असेसमेंट जो है बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और हमारे लिए तो बहुत नया है डेफिनेटली, और आई एम श्योर मेरे साथ साथ आप भी इसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे होंगे। सो एक क्वेश्चन डॉक्टर विनोद जहन में आता है कि इसका एक प्रोसीजर भी होता होगा, वेंडर को एक रिस्क एनालिसिस करने का एक प्रोसीजर भी होता होगा, तो कुछ बताएंगे उसके बारे में? Yes, so vendor risk assessments are being carried out through a questionnaire vendor risk assessment program. So this risk assessment aims to assess and investigate the organization's present and potential vendors. Okay, so when we conduct the questionnaire, when we conduct the assessment, the questionnaire will have the list of security controls. What supplier is having. So it will be similar to SOA in ISO 27001. It's equivalent to ROC in PCI DSS. It's
equivalent to like a SOC 2 technical reporting. So it's a similar sort of questionnaire. And along with that, we ask some artifacts, records. Like we ask them, do you have a cyber liability insurance? Because the reason is, if there is any sort of breach, that happens, whether are you in a position to support that? Because you are going to have judgments and fines from courts. So you need to be in a position, to address those. So that's like a transfer of risk, when companies have the cyber liability insurance. So now in United States, it's like a norm, because as a mandate requirement, we ask our suppliers, based on the tiering, of the supplier, you need to have the minimum cyber liability insurance, because we categorize the suppliers, like a tier 1 suppliers, who are very critical suppliers, where we share a lot of data, where the suppliers have a lot of control on the organization's data and information. And then the tier 2 suppliers, which are like most critical. And then comes, tier 3. And the rest of the category is called non-tiering, which are like the basic suppliers. And based on the tiering also, the assessment level will change, like, how deep we are conducting the assessment. And along with, cyber liability insurance, we also request for some of their copies. We request them, do you have information security management policies? So we request a copy of those policies, and also we request them, do you have an incident management procedure? Do you have a business continuity in place? So if you have a business continuity, please share the business continuity plan. And did you ever conducted a DR, disaster recovery test? So if you conducted the DR test, we need a copy of the DR test results. Okay, and if you are being certified by any compliance or global standards or requirements, example like ISO certification, PCI DSS, SOC, HIPAA, any of these, we request a copy of those certificates. So it's a very interesting program. Till now, we have enjoyed each and every bit of information that you have given to us or shared with us. Dr. Vinod, this Tech Talks has really become a very popular program here in India, at least. And we keep receiving many questions from our viewers. So still, as I'm talking to you, I'm being prompted that questions are being as we are talking to you, I'm being prompted that many questions are lined up for you. So let's take them one by one. So पहला क्वेश्चन है हमारा बरखा जी के यहाँ से. जी बताइए बरखा जी. Hello Dr. Dham and Mr. Rajesh. Myself Barkha from Ramani. We are the manufacturers of cold pressed oils. My question for you today is how to create an effective vendor risk management program. Thank you. Yeah, so to create an effective risk management program, so first you need to create a procedure itself, how you are going to conduct or how you are going to manage your vendor risks. Okay. So which includes a criteria, like as I said, so we are going to build up a questionnaire with a list of questions that's going to address our requirements. Then the list of documents required for us to support in conducting the risk assessment, as well as any additional documents or artifacts like certificates from different certification bodies that's going to address to that, and also a copy of the cyber liability insurance. Along with that, sometimes we conduct, as I said, we are going to conduct an forensic study on them. So we take a consent from them, stating that we are going to do sometimes an on-site or an off-site forensic study on the suppliers, which are going to be a very detailed study where we are going to study the due diligence of the supplier, from security standpoint,
We are going to study the user behaviors, from a risk standpoint. And also we are going to study, their organization structure, from a people standpoint, from a process standpoint, what processes they have, what procedures they have, what policies they have. And also we are going to study their technology. The technology, in fact, covers your infrastructure, your software, and also your cloud. लगातार प्रॉम्प्ट्स मिल रहे हैं और ये एक क्वेश्चन आ रहा है मिस्टर आदित्य की तरफ से। जी आदित्य जी, बताइए अपना क्वेश्चन क्या है। Dr. Naveen Dham and Mr. Rajesh. I am Aditya Laruya. I run my own law firm based out of here in Safdarjung, New Delhi. We have a proven capability in litigation and dispute resolution. My question for you today is, what is IT vendor risk management? Thank you. सो मैं देख रहा हूँ कि एक प्रॉम्प्ट मुझे और मिल रहा है। इससे पहले कि मैं आंसर लूँ, इनका भी क्वेश्चन ले लेते हैं। जी बताइए मिस्टर शरद। Hello, Dr. Naveen Dham and Mr. Rajesh. My name is Sharad Dutt. I am calling from Faridabad city. I am working with Globe Capacitors Private Limited as a senior manager operations and QA. My question is, what is vendor risk management maturity model? Thanks. Thank you, Aditya, for asking this question. I think previously I already answered this question, and Sharath, it's a good question. I can answer to this. So, vendor risk management maturity model is a comprehensive methodology, on assessing the level of maturity of the third-party risk management programs. So, this is including controls of data security, information security, cyber security, and information technology. So it allows any business to evaluate their suppliers or vendors for their products or services that they are offering to our organization. So this is going to happen as per industry standards and regulatory and compliance requirements. Because if you look at currently, so every country, they are coming up with their own privacy laws. In Europe, you have GDPR. In US, now it's not, we don't have a central policy as such, but every state have their own privacy acts, like California got CCPA. Now Colorado also got Colorado Privacy Protection Act. Then I think in India also, I think in August, so we got a new act, right? So I think it's been signed in August 23 by President. It's the Digital Privacy Protection Act. Yeah, so these are different regulations, and based on the initial GDPR, because GDPR came into force from 2016, and they started implementing from 2018, and now a lot of countries are taking GDPR as a model, and they are building up their own security, frameworks and privacy acts. So, when under the vendor risk management program or the maturity model, so there are different steps. Okay, so the criteria will be like how we are building a risk management program. What is the documentation that's required, for our vendor risk management program? Then we are going to look at what are my standards, because if I am in a financial business, if I am a banking business, okay, so there are certain regulations from different regulators that I need to adhere to. I need to follow certain standards, if I'm having a bank and I have a service of a credit card or any card, so then I need to adhere to PCI DSS standard. That's so wonderful. It's a lot of knowledge, in fact. Thank you for all this. And there is one more question which is coming to me, but we have already reached the end of the program, frankly. But in a jiffy, if you could answer, what is there any life span? I mean, is there any end of life? Is there any life cycle of a VRM? Yeah, so so for a vendor risk management life cycle begins, from onboarding of a supplier. So from the vendor risk management standpoint, when we onboard the supplier itself, we conduct a pre-contract assessment. Before even signing the contract, we do a very high level, risk assessment on the suppliers.
So what happens is like, because once we sign the contract, we need to adhere to all the terms and conditions. But even before that, we do a very high level risk assessment on the suppliers. Okay. Then once they are onboarded, we conduct the supplier risk assessment on an annual basis. So it could be an offsite, and sometimes we do even an on-site audit. So if we doubt anything like, okay, we are seeing something, which is not correct, and we will ask an, on-site visit. So we'll go to on-site visit at a supplier location, and we'll do an on-site audit and see that, whatever they are saying, whether that's accurate or not. And then what happens, this cycle continues till we have the contract in place, okay? But once we terminate the contract, okay, there is a procedure in the contract termination also. Since we are sharing our data, we need to ensure that, whatever data is there at a supplier side or a vendor side, that needs to be properly, backed up, provided back to us, and also clean up all the data, all the customer data or a company data, from a client standpoint. Yeah, so I want to add one more point. So there is a vendor termination process as part of the vendor risk management that we need to adhere to. So, डॉक्टर धाम, यूएस की तो हम मान सकते हैं कि एक हमारे से कुछ लेवल्स आगे है, वो चल रहे हैं और काफ़ी दूर की सोच के चलते हैं। इंडिया के अंदर कितनी अवेयरनेस है इसके ऊपर? इंडिया के अंदर भी जो भी कंपनीज हैं वो वेंडर रिस्क असेसमेंट करवाती हैं। जैसे कि हमें भी काफ़ी कंपनीज हायर करती हैं फॉर वेंडर रिस्क असेसमेंट। जैसे अगर वो कोई भी वेंडर को हायर करने जा रही हैं तो पहले हमें भेजा जाता है वहाँ पे, वेंडर के वहाँ पे, और देखने के लिए कि जहाँ भी वो ऑपरेट कर रहे हैं वो कितनी सिक्योर जगह है। जैसे कि समझ लो कोई क्लाउड प्रोवाइडर है, उसको लेने जा रहे हैं तो वहाँ तक भी हमें भेजा जाता है कई बार कि आप चेक करके आइए उनके जो पॉलिसीज प्रोसीजर्स हैं और जो भी वो ऑपरेशंस कर रहे हैं वो एज़ पर द साइबर सिक्योरिटी नॉर्म्स हैं कि नहीं हैं। तो उसमें हम पूरी वेंडर रिस्क असेसमेंट करते हैं, हम उनको रेटिंग देते हैं कि आपकी ये रेटिंग है, अभी आप रेड पे हो, येलो पे हो, ग्रीन पे हो, उस हिसाब से रेटिंग दे के हम उनको बताते हैं कि आपको ये क्लोजर एक्शंस करने हैं, तब जाके आप ग्रीन पे आओगे। जब वो ग्रीन पे आते हैं तभी उनकी ऑनबोर्डिंग कंपनीज करती हैं, नहीं तो वो नहीं करती। ओके, सो देखा आपने दोस्तों, ये एक टॉपिक ऐसा था जो कि वाकई में बड़ा इंटरेस्टिंग था, बिल्कुल नया था आईटी के लिहाज से भी, और हर तरीके से एक बहुत ही नायाब इन्फॉर्मेशन हमें मिली। आइए सबसे पहले थैंक यू कर लेते हैं डॉक्टर विनोद का, जो कि टैम्पा यूएस से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे को ये इन्फॉर्मेशन दी है, थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते जल्दी से आपको ये बता दूं कि ये प्रोग्राम टेक टॉक्स का स्पॉन्सर किया जाता है GISPL के द्वारा। उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। डॉक्टर नवीन धाम एक साइबर एक्सपर्ट हैं। यदि आपको अपनी कंपनीज की सिक्योरिटीज के बारे में कोई भी जानकारी हासिल करनी है तो उनके नंबर्स भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे GISPL को स्पॉन्सर करता है, वैसे ही क्लाउड एक्सेस भी इस प्रोग्राम को बनाने में उतनी ही शिद्दत से जुड़ा हुआ है। क्लाउड एक्सेस दुनिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जिसपे आप जीरो फुटप्रिंट के ऊपर अपना काम क्लाउड पे कर सकते हैं। जी हाँ, जीरो फुटप्रिंट्स नहीं होंगे तो डेफिनेटली आपके ऊपर अटैक्स भी बहुत कम ही होंगे। यदि आप क्लाउड के ऊपर अपना डेटा सेफ रखना चाहते हैं और सिक्योरली काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये प्लेटफॉर्म आपकी बहुत मदद कर सकता है। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। सेकेंड एपिसोड के अंदर आपसे मिलना बहुत इंटरेस्टिंग रहा। इसी तरीके से आपसे एपिसोड 3 के अंदर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।